অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দেশৰ কোটি কোটি মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো কিয়নো পাঁচটা বিশেষ গ্যাৰান্টি মহিলাক লৈ প্ৰদান কৰা হৈছে। এতিয়া নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে পাঁচটা বিশেষ গ্যাৰান্টি দিয়া হৈছে দুখীয়া ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই দুখীয়া ঘৰৰ এগৰাকীকৈ মহিলাই এতিয়া বছৰি 1 লাখ টকা লাভ কৰিব আৰু সমান্তৰালকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 50% মহিলাৰ বাবে চৰকাৰী চাকৰিত আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। অৰ্থাৎ কেইবাটাও বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পাঁচটা গ্যাৰান্টি দিয়া হৈছে মহিলাক লৈ। এটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত কোনে এই পাঁচটা বিশেষ গ্যাৰান্টি দিলে আমি সবিস্তাৰে লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ মহিলাক লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত মহিলাক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে দেশৰ কোটি কোটি মহিলাই ভাল খবৰ লাভ কৰিব। দুখীয়া ঘৰৰ মহিলাই বছৰি লাভ কৰিব 1 লাখ টকা আৰু চৰকাৰী চাকৰিত 50% আসন সংৰক্ষিত হ'ব মহিলাৰ বাবে। আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী ৰান্ধনীসকলৰ দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি হ'ব আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব। সাবিত্ৰী ফুলে নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল খোলা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু মহিলাক লৈ এনেদৰে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আহিলে দেশৰ কোটি কোটি মহিলাৰ বাবে ভাল খবৰ অৰ্থাৎ ভাল খবৰ পাব মহিলাই। দুখীয়া ঘৰৰ মহিলাই বছৰি লাভ কৰিব 1 লাখকৈ টকা আৰু চৰকাৰী চাকৰিত 50% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী ৰান্ধনীসকলৰ দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব আৰু সাবিত্ৰী ফুলেৰ নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে যিসকল মহিলাই কাম কৰি খাইছে তেখেতসকলৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। এটা অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বৃহৎ ঘোষণা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পাঁচটাকৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত বা গ্যাৰান্টি দিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে মহিলাক লৈ এতিয়া পাঁচটা গ্যাৰান্টি দিছে। দুখীয়া ঘৰৰ মহিলাই এগৰাকীকৈ মহিলাই দুখীয়া ঘৰৰ এগৰাকী মহিলাই বছৰি পাব 1 লাখকৈ টকা অৰ্থাৎ 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা এবাৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্যাৰান্টি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু সাবিত্ৰী ফুলেৰ নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আৰু মহিলাক লৈ এনেদৰে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। এটা ডাঙৰ খবৰ যেহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দল সংগঠনে নিজৰ নিজৰ নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ প্ৰকাশ কৰিছে, গ্যাৰান্টি দিছে, ইটোৰ পিছত সিটো নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ মাজতেই কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে মহিলাক লৈ পাঁচটা বৃহৎ গ্যাৰান্টি দিছে। চৰকাৰী চাকৰিত 50% আসন মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হৈ থাকিব আৰু দুখীয়া ঘৰৰ এগৰাকীকৈ মহিলাই বছৰি লাভ কৰিব 1 লাখকৈ টকা আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু লগতে সাবিত্ৰী ফুলেৰ নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাৰ বাবে বিশেষকৈ মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী ৰান্ধনীসকলৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনত দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলিও গ্যাৰান্টি দিছে। নাৰী ন্যায় বা নাৰী শক্তিক উদ্দেশ্যে এনেদৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে পাঁচটা গ্যাৰান্টি দিছে দেশৰ কোটি কোটি মহিলাসকলক আৰু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে এনেদৰে কেইবাটাও পাঁচটা বৃহৎ ঘোষণা বা গ্যাৰান্টি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি পুনৰবাৰ লক্ষ্য কৰিছোঁ এটা অতিকে ডাঙৰ খবৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিহেতু সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এনেদৰে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে এটাৰ পাছত আনটো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে। সাবিত্ৰী ফুলেৰ নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব যাতে মহিলাসকলে থাকিব পাৰে। সমান্তৰালকৈ দুখীয়া ঘৰৰ এগৰাকী মহিলাই লাভ কৰিব বছৰি 1 লাখ টকাৰ অনুদান, বছৰি 1 লাখ টকা দিয়া হ'ব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে। সমান্তৰালকৈ আশা কৰ্মী অংগনবাদী কৰ্মী ৰান্ধনীসকলৰ দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব আৰু চৰকাৰী চাকৰিত মহিলাৰ বাবে 50% আসন সংৰক্ষিত হৈ থাকিব বুলি গ্যাৰান্টি দিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছে আমি মন্তব্য আছে আমি মন্তব্য শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा
पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फुले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टेल खोलने जा रहे हैं। আৰু এয়া আছিল কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীৰ মন্তব্য। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এতিয়া মহিলাক লৈ 5টা বিশেষ গ্যাৰাণ্টি কথা উল্লেখ কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। এই মুহূৰ্তত আমি ফুল প্লেট মাধ্যমৰ জৰিয়তে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম। এটা ডাঙৰ খবৰ, আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী সকলোবিলাক মহিলাক লৈ এতিয়া বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। মহিলাক লৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে 5টা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে, 5টা গ্যাৰাণ্টি দিছে। কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ ৰাখিলেই কোটি কোটি মহিলা লাভান্বিত হ'ব বুলি দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে। দুখীয়া ঘৰৰ মহিলাই বছৰি লাভ কৰিব 1 লাখকৈ টকা। আৰু চৰকাৰী চাকৰিত 50% আসন সংৰক্ষিত হ'ব মহিলাৰ বাবে। আশাকৰ্মী, অংগনবাদী কৰ্মী, ৰাধনীসকলৰ দৰমহা দুগুণ বৃদ্ধি কৰা হ'ব। আৰু প্ৰতিটো পঞ্চায়তত এগৰাকী অধিকাৰ মৈত্ৰী নিয়োগ কৰা হ'ব। সাবিত্ৰী ফুলেৰ নামত প্ৰতিখন জিলাৰ বাবে মহিলাৰ বাবে হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে বা ঘোষণা কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু যিহেতু নিৰ্বাচনৰ দিন সমাগত আৰু চমুকৈ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি এনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে নিৰ্বাচনী টোপ দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। এটাৰ পিছত আনটো প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। আৰু এইবাৰ বছৰি মহিলাক দুখীয়া ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই 1 লাখকৈ টকা লাভ কৰিব বুলি
বৃহৎ গেৰাণ্টি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডাঙৰ গেৰাণ্টি দিছে কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এনেদৰে মহিলাক লৈ 5টা ডাঙৰ গেৰাণ্টি দিছে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে, য'ত দুখীয়া ঘৰৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই বছৰি পাব 1 লাখকৈ টকা সমান্তৰালকৈ বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে। ৰাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট ৰূপত উল্লেখ কৰিছে, ঘোষণা কৰিছে যে বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ মহিলাসকলৰ একাউণ্টত ধন সোমাব, অৰ্থাৎ মহিলাসকলৰ একাউণ্টত ধন জমা হ'ব। এই ঘোষণা কৰিছে এতিয়া কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে। পুনৰবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে কি কৈছিল আমি মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है, उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती, हम 50% रिजर्वेशन दे के आपको अंदर दरवाजा खोल के डालेंगे। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे। वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगी। और आखिरी काम, सावित्री फूले जी की जन्मभूमि है, तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए
हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे। उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम एक सावित्री फुले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को, चाहे वो मजदूरी करे, खेती करे, छोटा जॉब करे, हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। कल मैं एक आदिवासी महिला के घर के सामने रुका, बातचीत की। उनका बेटा पुलिस में भर्ती होने की कोशिश कर रहा है। उसका पेपर लीक होगा, पेपर के दिन उसको पता लगेगा कि किसी अमीर बच्चे ने पेपर खरीद लिया और उसकी मेहनत बेकार गई। उसकी मां महीने के 10,000 रुपए कमाती है, 25,000 रुपए का बिजली का बिल था, पानी का बिल है, 5-6 घर में वो कपड़े धोने का काम करती है। यूपी, हमारी सरकार आएगी, इंडिया की सरकार आएगी, उसी महिला की आमदनी दुगनी हो जाएगी। 1 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में हर साल ऑटोमेटिक डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में जाएगा। और वैसे ही हिंदुस्तान में करोड़ों महिलाओं के साथ, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपए आएगा। क्रांतिकारी कदम है ये। अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए दे सकते हैं, तो हम करोड़ों महिलाओं को 1 लाख रुपए दे सकते हैं। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हर सरकारी ऑफिस में कुछ ही सालों में आपको 50% महिलाएं दिखेंगी। तो हम आपके लिए दरवाजा खोलने का काम कर रहे हैं। आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, हम आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। सरकार में आपकी जगह नहीं बनती,